Hello everyone, today we are going to discuss our first sample paper of CBSE Class 10 Social Science for first term exam. As we know, maximum marks will be 40 and time allowed is 90 minutes. And here are some general instruction. If you want to read, you may read. Now let's start our questions. Question number 1 is, which years were of great economic hardship in Europe? Options are 1820s, 1850s, 1890s and 1830s. So our correct option is option D, 1830s. क्योंकि 1830s के टाइम पे क्या था कि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्रिएट हो गई थी यूरोप में. उसके बाद में क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरेबल वेस्टलैंड? ऑप्शंस आर लैंड लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 10 एग्रीकल्चरल ईयर, land left uncultivated for more than 5 agricultural year, land left cultivated for more than 5 agricultural year and land left uncultivated for more than 10 agricultural year. यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, हमें कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड के बीच में और जो 10 ईयर्स और 5 ईयर्स का गैप है, इन दोनों वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, land left uncultivated for more than 5 agricultural year. Now our question 3 is, a legitimate government is one where options are citizens through participation acquire a stake in government, option B government does not interfere, option C conflicts are encouraged and option D citizens are ignored. So our correct option is option A, citizens through participation acquire a stake in this system. Now, our question 4 is, the term absolutist is referred to. Options are a vision, none of these, monarchical government, and abstract theory. Now, our correct option in this question is option C, monarchical government. Now, our question 5 is, dash is the staple food crop of majority of people in India. कि स्टेपल फूड क्रॉप क्या है मेजोरिटी ऑफ पीपल, इंडिया के मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए? ऑप्शंस आर मेज, ज्वार, वीट, राइस. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइस. नाउ आर क्वेश्चन नंबर 6 इज, वाई केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो क्यों है? ऑप्शंस आर इट हैज़ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बी it has adequate provision of basic health and educational facilities, option C it has poor net attendance ratio and option D it has good climate condition. So our correct option is option B, it has adequate provision of basic health and educational facilities. Now our question 7 is, which of the quote is said by Metternich? Option A, little by little the old world crumbled and not once did the king imagine that some of the pieces might fall on him. Option B, when France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches a cold. Now option C is liberty, equality, fraternity or death, the last much the easiest to bestow, O Guillotine. Now option D is Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini is the most dangerous enemy of our social order. So the correct option is option D. Giuseppe Mazzini is the most dangerous enemy of our social order, was the quote said by Metternich. Now our question 8 is, with which of the following countries Belgium does not share its border? Option A Luxembourg, option B Italy, option C Netherlands and option D Germany. So our correct option is option B Italy. Now our question 9 is, the image of Germania guarding the Rhine was painted by which artist? Option A Pablo Picasso, option B Leonardo da Vinci and option C Lawrence Glassman and option D Frederick Choriev. Now our correct option in this question is option C, Lawrence Glassman. Our question number 10 is, the dash fruit of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal is famous. Option A banana, option B orange, option C mango and option D apple. So our correct option is option C, mango.
Now our question 11 is the government produces electricity because options are it is their duty to do so, no other institution can produce it, to generate profit, electricity produced by private sector is expensive. So our correct option here is option D. Electricity produced by private sector is expensive. Our question number 12 is the States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymens were composed, oaths taken, meritors commemorated, all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for all the citizens within its territory. The above events took place during which revolution? ये जो ऊपर इवेंट्स बताए गए हैं कि रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली को, एक्टिव सिटीजन द्वारा इलेक्ट किए गए स्टेट जनरल, उसके साथ में न्यू हाइमन कंपोज हुए, ओथ लिए गए और जो यूनिफॉर्म लॉज लगा दिए गए थे सिटीज़न के लिए टेरिटरी में कुछ, तो ये सभी इवेंट्स कब प्लेस हुए थे, कौन सी रेवोल्यूशन में प्लेस हुए थे, ये पूछा गया है हमसे. तो ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, the Hessian Revolution and French Revolution. So our correct option is option D, French Revolution. Now our question 13 is production of commodity mostly through the natural processes is an activity in dash sector. Option A tertiary, option B primary, option C information technology and option D secondary. So our correct option is option B, primary. Now our question 14 is to get more income people need. Option A better wages, option B equal treatment, option C freedom and option D security. So our correct option here is option A, better wages. Now our question 15 is who was frightened by Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics? Option A aristocrats, option B moderates, option C liberals and option D is conservatives. So our correct option is option D, conservatives. Now our question 16 is which relief feature of India constitutes 27% of the total surface area of country? Option A mountain, option B plain, option C desert and option D plateaus. So our correct option is option D, plateaus. Now our question 17 is which language is spoken by the majority of Belgians? Options are English, German, French and Dutch. So the correct option is option D, Dutch. Now our question 18 is which part of population has affected most by the development of tertiary sector? Option A small shopkeeper, repair person and transport person etc. Option B skilled and educated worker, option C farmers and option D unskilled worker. So our correct option is option A small shopkeepers, repair person and transport person etc. Question 19 is the 1830s were the year of great economic hardship in dash. तो हमने ये क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था हमारा कि जो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हुई थी यूरोप में वो कब हुई थी. हमारा आंसर था 1830s. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यूरोप रहेगा. बिना ऑप्शन देखे भी हम बता सकते हैं लेकिन हमें ऑप्शन हर बार पढ़ने हैं कि यूएसए, इंडिया, जर्मनी एंड यूरोप आर द ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूरोप. नाउ आवर क्वेश्चन 20 इज slash and burn shifting farming is referred to as dash in northeastern state like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Options are primitive, tribal, zooming and pamlau. So the correct option is zooming, option C. Now our question 21 is the development goal of a rich girl in urban family is option A freedom, option B going to school, option C get married and option D is learning cooking. So our correct option is option A, freedom. Now our question 22 is which region was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801? Options are Sweden, Hungary, Austria and Ireland. Correct option is option D, Ireland. Now our question 23 is
how many scheduled languages are recognized by Indian Constitution? Option A, besides Hindi, there are 22 scheduled languages. Option B, besides Hindi, there are 19 scheduled languages. Option C, besides Hindi, there are 21 scheduled languages. And option D, besides Hindi, there are 18 scheduled languages. So, our correct option is option C. Besides Hindi, there are 21 scheduled languages. Now our next question 24 is National Sample Survey Organization conducts the survey on employment and unemployment in every 6 years, 5 years, 10 years, 7 years. So our correct option is in every 5 years, option B. Now our question 25 is and who prepared a series of 4 points visualizing a world of democratic and social republics. Option A, none of these. Option B, 1815, Duke Metternich. Option C, 1848, Frederick Chauveau. And option D is 1804, Napoleon. So our correct option is option C, 1848, Frederick Chauveau. Our question 26 is find the odd one out. SpiceJet, All India Radio, Indian Railways and MTNL. Options given to us are ऑप्शन ए का है बी, ऑप्शन बी का है डी और ऑप्शन सी में गिवन है ए और ऑप्शन डी में गिवन है सी. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी कि जो ए पार्ट है, जो ए हमें दे रखा है स्पाइस जेट, वो अलग है इन चारों में. क्यों अलग है? क्योंकि जो स्पाइस जेट है ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है, जहाँ पे कि बचे हुए जो तीनों हैं ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन रेलवेज और जो MTNL है ये पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है. नाउ आवर क्वेश्चन 27 इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged in opposition to the notation of undivided dash. Options are political power, judiciary power, legislative power and executive power. Our correct option is option A, political power. Now our question number 28 is what is the capital of city of Belgium? Options are Brussels, Amsterdam, Vienna and Antwerp. So our correct option is option A. Brussels is capital of Belgium. क्वेश्चन 28 के बाद में हम करेंगे असर्शन एंड रीज़न के जो क्वेश्चन हैं उनको. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करने होंगे आंसर्स को हमारे. और क्वेश्चन 29 से शुरू करते हैं अब हम. सो क्वेश्चन 29 में असर्शन दे रखा है कि पल्सेस आर नॉट कंसीडर्ड अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट. एंड रीज़न दे रखा है राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेन टू ग्रो. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो पल्सेस क्या होते हैं, इन्हें प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, मेजर सोर्स माना जाता है. तो ये असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. और राइस क्या है कि खरीफ क्रॉप है, इसको रिक्वायर लॉट ऑफ रेन की रिक्वायर होती है, यानी कि वाटर ज़्यादा चाहिए. तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. और इसके बाद में क्या है कि जो असर्शन है ये कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न के लिए कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी. असर्शन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. अब हमारा जो क्वेश्चन 30 है उसमें असर्शन दे रखी है कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड केरला जो रीज़न है वो है केरला लैक्स द प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. तो यहाँ पे जो हमारी असर्शन है वो बिल्कुल सही है कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लेकिन जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि केरला इज़ गुड इन प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़. लेकिन यहाँ पे तो लैक्स दिखा रखा है, यानी कि कमी है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी. असर्शन इज़ करेक्ट, यानी कि असर्शन जो हमारी ए है वो करेक्ट है और बट रीज़न इज़ रॉन्ग, जो रीज़न है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है. उसके बाद में हमारा 31th जो है क्वेश्चन उसमें असर्शन दे रखी है टेरेस कल्टीवेशन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट सॉयल इरोजन. डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इरोजन. रीज़न क्या है? रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉयल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज. अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो टेरेस कल्टीवेशन है वो डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इरोजन.
तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन की स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सोयल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि असर्शन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। हमने देखा कि यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीज़न सही है। अब इसके बाद में हमारा जो 32 क्वेश्चन 32 है वो उसमें असर्शन दे रखा है कि मोहन इज़ अ शॉपकीपर हु पेज हिज टैक्सीज ऑन टाइम। He has employed two workers, Rakesh and Raghu, in his shop. He pays them well, however, none of the workers get any paid leave in the year. अब इसमें क्या है कि रीज़न दे रखा है राकेश एंड रघु आर एम्प्लॉयड इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो हमारा जो 32 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कि असर्शन जो है वो भी करेक्ट है और जो रीज़न है वो भी करेक्ट है, एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Now, question 33 is assertion given to us is culture played an important role in creating the idea of nation. एंड इसका रीज़न दे रखा है कि वीवर इन शलेशिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड गेव देम order for finished textiles but drastically reduced their payment. अब यहाँ पे क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस 33rd क्वेश्चन के आंसर के लिए वो है ऑप्शन बी, कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब इसके बाद में जो हमारा 34th क्वेश्चन है ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 34 टू 37 ये सभी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है कि ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बता देता हूँ, आंसर्स बता देता हूँ। तो क्वेश्चन 34 इज सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज डैश टाइप ऑफ फेडरेशन ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्टेट आर डैश कंपेयर टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शंस क्या है, कमिंग टुगेदर वीक एंड होल्डिंग टुगेदर एंड स्ट्रॉन्ग, कमिंग टुगेदर एंड स्ट्रॉन्ग एंड होल्डिंग टुगेदर एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज़ अ कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, तो हमें पता लग गया कि ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी में से एक है। उसके बाद में ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर एंड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द फेडरल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन 35 है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। Options are a large country divide its power between constituent state and national government. The central government tends to be more powerful, vice versa the states. And option C is all the constituent states usually have equal power. And option D is constituent state have unequal power. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन 36 है वो है इंडिया इज़ अ टाइप ऑफ डैश फेडरेशन एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर। इन इंडिया द डैश गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स। ऑप्शंस आर होल्डिंग टुगेदर एंड स्टेट, ऑप्शन बी होल्डिंग टुगेदर एंड सेंट्रल, ऑप्शन सी कमिंग टुगेदर एंड सेंट्रल एंड ऑप्शन डी इज कमिंग टुगेदर एंड स्टेट। तो इसमें क्या रहेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन कि इंडिया इज़ अ टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि ए एंड बी में से आंसर रहेगा। एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन 37 है व्हाट आर द काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। ऑप्शंस आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। उसके बाद में ऑप्शन बी large country decides to divide its power between the states and the national government. उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन सी है वो है कि बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।
अब हमें क्या आंसर करना है कि 38 टू जो 40 क्वेश्चन है, 38, 39 एंड 40 जो क्वेश्चन है तीन, उन्हें हमें आंसर करना है इस मैप के बेस पर। यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 38th क्वेश्चन है, वो है इन दिस मैप लेबल ए रिप्रेजेंट्स सरदार सरोवर डैम, हीराकुड डैम एंड नागार्जुन सागर डैम एंड तुंगाभद्रा डैम। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, तुंगाभद्रा डैम। इसके बाद में क्या होगा कि क्वेश्चन 39 है इन दिस मैप लेबल बी रिप्रेजेंट्स बिहार मेजर राइस प्रोड्यूसर, ओडिशा मेजर राइस प्रोड्यूसर, झारखंड मेजर राइस प्रोड्यूसर एंड वेस्ट बंगाल मेजर राइस प्रोड्यूसर। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, झारखंड मेजर राइस प्रोड्यूसर। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन 40 है वो है इन दिस मैप लेबल सी रिप्रेजेंट, लेबल जो सी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है एलुवियल सोयल हरियाणा, एलुवियल सोयल पंजाब, एलुवियल सोयल उत्तर प्रदेश एंड एलुवियल सोयल बिहार। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एलुवियल सोयल हरियाणा। तो आप एक बार मैप को यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये है ऑप्शन, यहाँ पे ये है ऑप्शन ए जो लेबल ए है, लेबल बी एंड लेबल सी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने हमारा जो पहला सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही हम हमारी रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।